Welcome back. Today we are going to study the third lesson from your flamingo, that is deep water. It is an autobiographical structure written by William Douglas. William Douglas in this lesson describes about the incident, misadventure that happened in his life when he was 10 or 11 years old. वो क्या था इंसिडेंट and उसके बाद what happened in his life and how did he overcome the crisis. That is what we are going to study, written by William Douglas. ये पूरा स्टोरी हाइड्रोफोबिया के थीम के ऊपर है. इसमें एक अच्छा मैसेज बोल रहे हैं, fear itself. We should fear only one thing in the world, that is fear. डर से डरो, क्योंकि डर सबसे बड़ा खतरनाक चीज है. देखो लेसन, it had happened when I was 10 or 11 years old. ये घटना मेरे साथ हुआ था जब मैं 10-11 साल का था. And I had decided to learn to swim. स्विमिंग सीखने के लिए डिसाइड कर दिया. There was a pool at the YMCA, Young Men's Christian Association, in Yakima that offered exactly the opportunity. वो एक्सैक्ट मौका देने वाला स्विमिंग सीखने का राइट अपॉर्चुनिटी देने वाला एक स्विमिंग पूल YMCA में था. वहां पे एक नदी भी है, याकिमा रिवर. But the Yakima river was very treacherous, dangerous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. Mother warned me against going there. मम्मी बार बार वहां जाने से मुझे मना करती थी. And kept fresh in my mind the examples of each drowning in the river. एक एक एग्जाम्पल बोल के बेटा वहां पे नहीं जाना, क्योंकि याकिमा रिवर बहुत ट्रेचरस है and so many people lost their lives in the waters. But YMCA swimming pool was very safe. Why? Because it was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. Shallow means not deep. जहां पे गहरा कम है वहां पे 2-3 feet गहरा ये. Why? It was 9 feet at the other. दूसरा तरफ 9 feet and the drop was gradual. धीरे 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 गहराई बढ़ते 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 जाए. So you can stand in such a place where you feel it comfortable. आपको जहां पे कंफर्टेबल लग रहे वहां पे उसी जगह पे आप खड़ा हो सकते हैं and you can learn swimming. I got a pair of water wings. Water wings are pads which are worn in hands so that you can float in water. हाथ में पहनने वाला एक पैड है. अगर पहने तो पानी में डूबेगा तो नहीं, पानी के ऊपर रखेंगे. And I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk there naked and show my skinny legs, thin legs. विलियम डगलस इतना कमजोर लड़का है, पतला लड़का है, and he did not have the power to go there and show his skinny legs to others. But I subdued my pride and did it. लेकिन मैं उसको ओवरकम कर दिया. कोई बात नहीं, मुझे स्विमिंग सीखना है. And I did it. I went there. स्विमिंग पूल पे. ये कब की बात है? When he was 10 or 11 years old, he decided to learn to swim. लेकिन ये बोल रहे, but from the beginning, however, I had an aversion, dislike to the water when I was in it. लेकिन बचपन से ही मेरा मन में पानी से डर था. when I was inside the water. नहाते
पानी तो यूज कर रहे, दैट इज अनदर, लेकिन पानी के अंदर जाना बचपन से स्टार्ट हो गया था ये डर. दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कब, कैसे? दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. ये घटना हो गया जब मैं 3-4 साल का था. मेरा पापा मुझे कैलिफोर्निया बीच देखने के लिए ले गए. बीच में सी शोर. He and I stood together in the surf, foamy waves. जाग वाला वेव्स एंजॉय करके मैं और मेरा पापा, हम दोनों वहां पे एंजॉय कर रहे थे. I hung on to him. मैं पापा के कंधे के ऊपर लटका हुआ है. Yet फिर भी the waves knocked me down and swept over me. बहुत बड़ा लहर आ गया, मेरे ऊपर से निकल गया, मुझे गिरा दिया, मेरे ऊपर से पानी निकल गया. I was buried inside the water. मैं पानी के अंदर दबना गया. पानी मेरे ऊपर से निकल गया. My breath was gone. सांसें रुकी. But I was frightened. Father laughed. मैं तो डर गया क्योंकि ये छोटा लड़का 3-4 साल का था. He was totally afraid of the situation. But father ये सीन देख के हंस रहे. But there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. तब से मेरा मन में overpowering वेव का ओवरपावर का डर तब से मेरा मन में स्टार्ट हो गया था. कब की बात है? When he was only 3 or 4 years old. What was the incident? फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच देखने के लिए गए थे. बहुत बार enjoying the surf. Suddenly a great wave knocked him down. He was buried inside the water. Father laughed but he was frightened. तब से मेरे मन के अंदर ये पानी के साथ डर शुरू हो गया था. अब 10 साल का हो गया. My introduction to the YMCA swimming pool revived, brought back unpleasant memory. लेकिन ये स्विमिंग पूल में आते ही मेरा मन में वो पुराना वाला अनप्लेजेंट मेमोरी आ गया. एंड स्टिर करना, हिलाना. माई चाइल्ड फियर. ये पानी स्विमिंग पूल है, लेकिन ये स्विमिंग पूल का पानी देखते ही मेरा वो माइंड के अंदर जो पड़ा था वो चाइल्डिश मेमोरी वापस आ गया. लेकिन इन ए वाइल, लिटिल वाइल, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. कुछ टाइम के अंदर I gathered confidence and paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn swimming, aping them. So I got a pair of water wings. मुझे water wings मिल गया. And I paddled. Paddle करना, move the hands and legs together in water. Paddle with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping, copying, imitating them. बाकी लोग क्या कर रहे वो देख के वाटर विंग्स पहन के मैं भी स्विमिंग सीखने के लिए कोशिश किया. I did this 2 or 3 times on different days. अलग अलग 3-4 दिन में ये कोशिश किया and was just beginning to feel at ease. पानी के साथ थोड़ा ईजीनेस महसूस हो रहा था when the misadventure happened. मेरे साथ बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया. So what was the misadventure? अब देखना 2-3 दिन ही आ गया. थोड़ा बहुत पानी के पहले से ही पानी से डर था, बट 2-3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे, पानी के साथ थोड़ा फ्रंटली महसूस हो रहा था. तब उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक मिसएडवेंचर हैपेंड. क्या था वो? I went to the pool when no one was there. मैं एक बार उसी टाइम पे गई, वहां पे कोई नहीं था. The place was quiet, totally calm, still. The water was still. There is no movement in the water. पानी बिल्कुल still. And the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. टाइल बिछाया वाला ये स्विमिंग पूल का बॉटम इतना क्लियर एंड व्हाइट है, एक बाथ टब की तरह.
ऊपर से बिल्कुल क्लीन वाटर. And I was timid. इतना courage नहीं. He was really afraid of. I was timid, having no courage to go alone. वहां पे अकेले जाना, क्योंकि वहां पे कोई नहीं है. No one was there. The place was quiet. So I sat on the other side of the pool to wait for others. इसलिए मैं वहां पे दूसरा साइड पे बैठ के, दूसरा साइड क्या है, वो 9 फीट गहरा है, उसके ऊपर बैठ के he began to wait for others. तो बचपन से विलियम डगलस के मन के अंदर एक डर था, हाइड्रोफोबिया तो था. कैसे? When he was 3 or 4 years old, he went to California beach with his father. Both were standing, enjoying the foamy waves, but suddenly a great wave knocked him down. He was buried under water. तब से हाइड्रोफोबिया स्टार्ट हो गया था. फिर बड़ा हो गया, 10-11 साल का हो गया, he decided to learn swimming. वहां पे एक स्विमिंग पूल था, YMCA में. Why was the YMCA swimming pool safe? Because it was only 2 or 3 feet at the shallow end, while it was 9 feet at the other, and the drop was gradually. He got a pair of water wings and went there for learning swimming. अब याकिमा रिवर में जाना मम्मी क्यों मना करती थी? Because Yakima river was very treacherous, and mother kept fresh in his mind the details of each drowning in the water. तो एक बार वहां पे आ गया, पानी बिल्कुल साइलेंट. So since there was no one, he waited for others. Then what happened? Let us see in the next class. Thank you.